So hello everyone, and in this video we are going to analyze Nifty and Bank Nifty for tomorrow. और अगर हम निफ्टी देखते हैं previous day में निफ्टी was actually consolidating, pennant बना के रखा था. But what happened last day? ये market opened at this level. मतलब pennant को breakout किया. I'm pretty sure at least for some time there might be people will be bullish and कि चलो pennant breakout है, market is going to head higher. But it was like a trap और सीधा gap fill किया. And then it gave us breakdown of this trend line. So after that, we had some good downside momentum. But at the very end, we had very aggressive buying as well. अभी ना दो चीज हो सकते हैं यहाँ पे. एक तो अपना जो ये ट्रेंड लाइन है, ऐसा हो सकता है मार्केट कम जो इसको रीटेस्ट करके वापस नीचे नीचे चले जाए. और दी अदर थिंग, लाइक लुक एट दिस ट्रेंड लाइन. ओके, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस. आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस कैंडल बिकॉज ये फेक आउट कैंडल था ना. तो क्या देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया एंड यू विल सी दिस ब्रेकआउट हैज वॉल्यूम्स. सो नाउ ना इट इज अ लिटिल डाइसी बिटवीन दीज टू लेवल्स. सो मेरा क्या मानना है कि जब तक मार्केट ये दो लेवल में ना, ये वाले लेवल और ये वाले लेवल, ये ट्रेंड लाइंस के मिडिल में, that is our no trading zone. We are not going to trade as long as the market is between these two levels. पर अगर इसके ऊपर जाता है, then we can have a bullish bias and we can look for longs. और same goes for down वाला. अगर इसके नीचे चला जाता है, then we can have a bearish bias and we can look for shorts. अभी ना एक और चीज, अभी मार्केट ऐसा कंसोलिडेट करता है ना, it's a very simple thing, कुछ complicated नहीं, but it works most of the time. Like it's a good thing. Like you just take the low and the high of the range and you will see it's around 430 points ना. तो 430 का हाफ क्या हुआ, 215. सो यू जस्ट मार्क फ्रॉम द लो 215 पॉइंट्स और अराउंड ये लेवल पे आ रहा है, दिख रहा है. तो एज लॉन्ग एज द मार्केट इज, जो प्राइस इज बिलो दिस लाइन, यू कैन हैव अ बेरिश बायस एंड अबाउट दिस यू कैन हैव अ बुलिश बायस. अभी इससे क्या होता है, यू विल नेवर बी एबल टू कैच द बॉटम और कैच द टॉप. बट यू, even I, even you, each one of us know that most of the times we lose money trying to catch the bottom, trying to catch the top. तो वो अभी करो ही मत ना. आपको आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो, एंड यू कैन जस्ट डू द सिंपल जो मैंने आपको दिखाया ना, ये टेक्निक. यू डू इट ऑन एनी रेंजेस एंड यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वर्क. एंड हैविंग अ बायस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ लुकिंग फॉर अ ट्रेड ना. पहले बायस होना चाहिए, तभी आप देखोगे लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है. तो दैट दिस इज द थिंग फॉर मी. आई एम गोइंग टू लुक एट दीस टू लेवल्स. जब तक मार्केट यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड. उसके ऊपर आई विल बी बुलिश, उसके नीचे आई विल बी बेरिश. ये जो मैंने आपको रूल बताया हाफ वाला थिंग, दैट्स नॉट समथिंग आई कंसिडर अ लॉट बिकॉज I do try catching tops and bottoms, but if you're someone who's not able to do that, तो ये वाला rule करो because it's something that really works well in the long term. And now let's look at Bank Nifty. Bank Nifty में अगर हम आएंगे, we'll see that Bank Nifty ने जो इसका wedge जैसा बनाया था, actually यहाँ पे wedge बना रहा था, and after that there was like a double top that happened. और ये double top का जो neckline था उसको तोड़ के वापस आया, right? And अगर आप wedge को देखते हो तो wedge को भी तोड़ के it's given a good downside. तो ये डाउन साइड करके अगर यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे आता है ना, और इवन अगर यहाँ पे होता है ना, देन वी कुड बी बेरिश. बट नाउ देखो ना क्या हुआ है, इट इज एक्चुअली गिवन गॉन अबाउट द नेकलाइन. सो यू कांट जस्ट बी बेरिश ऐसे ही. और एक और चीज नोटिस करो, ये ट्रेंड लाइन जो देख रहे हो ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस. सो अगेन बैंक निफ्टी हैज एंडेड एट रेजिस्टेंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द मार्केट इज एबल टू सस्टेन अबाउट दिस लेवल. और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, यू विल सी दैट कहाँ पे एंड हुआ है, कहाँ से लाइक ऑलमोस्ट ये लिया 0.236 लेवल ना. सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द मार्केट सस्टेन्स अबव 0.236 एंड अबव द लास्ट डेज ये वाले कैंडल का जो भी हाई है, देन वी कैन हैव अ बुलिश बायस. बट अगर वो नहीं करता है, देन आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ बुलिश बायस. समझ रहे हो? एंड वेयर आई एम गोइंग टू बी बेरिश इज बिलो दिस नेकलाइन, बिकॉज अगर ये नेकलाइन के नीचे जाता है तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनसाइड इन द मोमेंटम, बिकॉज ये 0.236 का भी रिजेक्शन लेगा ना. Now, there is one more thing that can happen over here, which can also happen in Nifty, कि मार्केट आएगा, ठीक है, मे बी फ्लैट खुलेगा या थोड़ा ऊपर खुलेगा, नीचे आएगा, एंड देन इट माइट मेक अ सेकंड बॉटम, ताकि अपना डबल बॉटम करके अपसाइड मूव कर सकता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी निफ्टी, इट इज अ लॉट क्लियर बिकॉज वी हैव टू रेंजेस, बट इन बैंक निफ्टी दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस. यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस पे खुला है एंड वी हैव फिबोनाची. सो दीज टू थिंग्स आर व्हाट्स इन अस. बट मेरे को कल ना देयर इज मोर क्लैरिटी इन ट्रेडिंग निफ्टी, बिकॉज मेरे को एक्जैक्टली पता है वेयर आई एम गोइंग टू बी बुलिश, वेयर आई एम गोइंग टू बी बेरिश. बैंक निफ्टी में भी ऐसा नहीं है. बैंक निफ्टी इज आल्सो वेरी लाइकली टू फॉलो अलोंग विद निफ्टी, but normally when I trade bank nifty, I might trade tomorrow nifty if I'm trading, that is. So this was the analysis video. um Main is on level zone is on having a bias.
After that, it's upon how the market moves, which I don't think any one of us will know kya hoga. So let's see. I hope these levels help you for tomorrow's day, and I'll see you in the next video.